Hello everyone, today I will explain you about the topic that is environmental pollution. In this topic I will explain you the definition, classification of environmental pollution and the causes of environmental pollution. So first is the definition, how we can define it. Simply it can be defined as undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of air, water or soil which cause harmful effects on different life forms and property. So this is the simplest and complete definition of environmental pollution. Now in this, here we have one question that whether pollution and contamination both are same or any difference is there. So I will explain you with the help of an example about the pollution and the contamination, difference between pollution and the contamination. So let us have a look. Here I have considered one example of mercury. मरकरी का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि कंटामिनेशन और पोल्यूशन क्या दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है ना. तो एज वी नो दैट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी in drinking water is less than 0.001 mg per liter or we can say that 1 microgram per liter, अगर ड्रिंकिंग वाटर में मरकरी की कंसंट्रेशन 0.001 mg पर लीटर से कम है. क्यों हम 0.001 की बात कर रहे हैं? वाई वी आर टॉकिंग अबाउट 0.001? बिकॉज 0.001 mg पर लीटर concentration of mercury is maximum permissible limit. मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है पोल्यूटेंट्स की कि कितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक ये परमिट किया जा सकता है, हो सकता है उसमें. कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी इन वाटर शुड बी 0 बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल टॉक्सिक हेवी मेटल. मर्करी की जो कंसंट्रेशन है वो वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में 0 होनी चाहिए, है ना. बट if the concentration of mercury is less than maximum permissible limit, maximum permissible limit को कौन सेट करता है? फॉर एग्जाम्पल WHO, US EPA, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. तो अगर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से कंसंट्रेशन किसी भी पोल्यूटेंट की कम है तो उसको बोलेंगे हम सिंपली कंटामिनेशन. दैट इज सिंपली कंटामिनेशन. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी पोल्यूटेंट of any element in water is more than the maximum permissible limit, then that is definitely the pollution. So this is the difference between contamination and the pollution. Now the types of the pollution. Generally we talk about water pollution, air pollution, soil pollution, noise pollution, but broadly we can classify pollution into different categories. So you should know what is the difference between all these. So firstly we can say that pollution may be natural or pollution may be man-made. Here I have an example for natural pollution. Natural pollution भी हो सकता है, natural causes हो सकते हैं, man-made causes होंगे तो उसको बोलेंगे man-made pollution. For natural pollution examples are forest fire, volcano eruption. For man-made pollution we have different examples: burning of fossil fuels, burning of waste, disposal of solid waste, disposal of sewage in water bodies. So these are the examples of natural and man-made pollution. Second category, second classification, according to the pollution may be direct or pollution may be indirect. Direct, here we have example for direct pollution is the effluent discharge in water body. कोई इंडस्ट्री किसी वाटर बॉडी में effluent मीन्स उसका जो वेस्ट वाटर होता है उसको अगर डिस्चार्ज करे तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट पोल्यूशन. इनडायरेक्ट पोल्यूशन एग्जांपल इज सपोज पोल्यूटेंट्स आर इन द सोयल में पोल्यूटेंट्स हैं. नाउ विद टाइम द पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सोयल goes to the underground water table. So that is the example of indirect environmental pollution. Now according to third classification, pollution may be local, pollution may be regional,
pollution may be transboundary or pollution may be global. So this is as per the effect of the pollution. So if we are burning solid waste near the or the side of our home, है ना, तो that is the example of local pollution, burning of solid waste, household waste. Regional pollution, burning of agricultural residues by the farmers. फार्मर्स क्या करते हैं, कभी कभी किसी पर्टिकुलर सीजन में लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चरल रेजिड्यू को बर्न करते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्न करते हैं, है ना. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रीजनल एनवायरमेंटल पोल्यूशन. नेक्स्ट इज ट्रांसबाउंड्री. ट्रांसबाउंड्री एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स इफ देयर इज पोल्यूशन इन वन कंट्री बट द इफेक्ट ऑफ दैट पोल्यूशन is on another country. So this type of pollution is known as transboundary pollution. And now the carriers of transboundary pollutions are either water or air. दो इसके कैरियर होते हैं, या तो water होता है या air होती है. In this last category is, or as per the last classification, that is pollution may be global. So here we have different example for global pollution. For example, global warming is the example of global pollution. Ozone layer depletion is also the example of global pollution. Now next in this lecture is the causes of pollution. Generally we considered as or assume that pollution is only due to man-made activities. अक्सर हम ऐसा समझ लेते हैं कि जो pollution है वो man-made activities की वजह से, but it is not true. We have different examples of natural causes for the environmental pollution. So here we can divide the causes into two different categories. First is natural causes of pollution and the man-made causes of pollution. So here first example is decay of dead matter. Decay of dead matter, natural matter, debris in natural bodies, soil, or animal dead body in aquatic body. So that is also cause pollution. Next is leaching of salts. Leaching of salts means leaching of salts from rocks in underground water table, है ना. जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, रॉक से वहां से कुछ सोल्ट्स लीच आउट होते रहते हैं, डिजोल्व होते रहते हैं. तो दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. नेक्स्ट इज वोल्केनो इरप्शन. अगर किसी वजह से वोल्केनो इरप्ट हो जाए तो उससे भी काफी पोल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट फायर्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एंड हियर लास्ट एग्जाम्पल इज स्टॉर्म्स. Storms are also responsible for the water pollution and the poor quality of air due to the presence of suspended particles, dust particles in the air. So these are the some natural causes. Now the man-made causes. First is burning of fossil fuels, and as we know that fossil fuels cause or emit different type of pollutants. Next is deforestation. Deforestation is the indirect example of pollution because forests absorb large quantity of carbon dioxide from the air. Third example is burning of waste, burning of solid waste, municipal waste, industrial waste, use of pesticides, use of synthetic chemicals, use of industrial other chemicals, for example chlorofluorocarbon, and last is the industrial emissions, developmental activity, mining activity. So there are so many examples of man-made activities which cause environmental pollution. So this is all about today's lecture. Thank you.